I am starting with the conditions for physical acceptability of wave function, and you know that this wave function considered for a particular particle, it must be finite for all the values of x, y, z. That is, there must be a finite value of wave function psi in order to have the finite probability. And second, the psi wave function must be well behaved, means it must be single valued and continuous anywhere. Okay, so the wave function must be continuous everywhere, and it must be single valued, and this psi must be continuous in all regions except in those regions where the potential energy is infinite. We have also seen one example of one dimensional potential state, जहां आपने देखा था कि जब आपका V infinite potential होता है रिजिड वाल पर, तो वहां पर जो आपका वेव फंक्शन होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है. So psi must be continuous in all the regime. So if suppose you are talking about a one dimensional potential box, so there the wave function must be continuous. And at the wall, when there is an infinite potential, so this wave function becomes discontinuous there. There is one important property of a wave function which is also known as the superposition or principle of superposition. Classic in wave mechanics or optics, you know that property, that if suppose you have n number of waves, and suppose the displacement of waves are y1, y2, y3, and they are superposed to each other, so their resultant displacement becomes y equals to y1 plus y2 plus y3 plus yn. So similarly, if suppose you have n eigenstate corresponds to a particle, and in this n eigenstate, suppose there are wave functions psi1, psi2, psi3, psin corresponds to each eigenstate. So similarly here we can also write down these wave functions in the form of their linear combination or in the form of superposition principle. That is called superposition principle. So if psi1 to psi n are the wave functions, so how we will write down using the superposition principle, the resultant wave function psi will be equals to a1 psi1 plus a2 psi2 plus an psi n. Okay, so that psi, the new defined, the new obtained psi wave function here, it will also satisfy the above conditions which we have defined above 1, 2, 3. So if suppose psi1, psi2, psin wave functions, these are finite wave function, single valued and continuous. So the resultant wave function will be also a finite, single valued and continuous wave function. Okay, and this wave function psi, if we take mod psi square, so it gives probability, and we know that psi mathematical formula of psi, it is equals to e to the power minus I px x minus et by h square. So you know that as we the x increases, that is as we go far beyond, so the probability decreases there. So x jitna small hoga, probability of finding a particle uski utni zyada hogi. But as x is large, that is when we are talking about the regime when x is very large, that is suppose x tends to infinite, minus or plus infinite. So at x tends to infinite, our probability becomes almost zero, that is wave function also goes to zero. So when x tends to infinite, whether minus or plus, in both the region, minus infinity or plus infinity, so the probability will become zero there, that is psi will be also zero there. So कहने का मतलब हुआ कि पार्टिकल की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है मॉड साई स्क्वायर, वो वहां मैक्सिमम होगी जहां पर जो आपका पोजीशन है x वो स्मॉल है. ओके, व्हेन वी विल गो फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ x, so the probability will decrease.
since our function psi equals to a to the power ipx x. Okay, so as minus ix. Okay, so as x will increase there, so the probability of finding particle will decrease there. So these are some properties, and these must be satisfied by a wave function. Now there are two important property you must remember, that whenever we designate the wave functions of a particle in different eigenstate, so these wave function, they shows the orthogonal condition and normalization condition. So you all know that if suppose there are two wave functions corresponds to two different eigenstates, one eigenstate is psi I, that is the wave function of a particle in ith energy state, and another wave function is in the jth energy state. So two wave functions are called the orthogonal wave function if they satisfy this condition. So integral of psi I asterisk x psi j x dx, if it is 0 and I is not equal to j, means these are two distinct energy states, not same energy state. So if this integration in the limit minus infinity to infinity is equals to 0, so this will be called the orthogonal wave functions, or these are also called the orthonormal wave functions. Similar like when two vectors are orthogonal to each other, so their dot product is equals to 0. तो ऐसे यहाँ पर अगर दो वेव फंक्शन है जिसमें से किसी भी एक का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंड अदर वेव फंक्शन, so their product and integration is equals to 0, so this is called the orthogonality condition. Okay, and normalization condition you already know, I have already discussed the normalization condition. And if we combine these two equations, so we can write down them in generalized form also. So in next slide I will discuss that. So this normalization condition, that is integral of mod psi square dx equals to 1, that is integral of psi I asterisk psi dx equals to 1, that is called normalization condition. So in normalization condition, there is a one wave function and its complex conjugate. So if that integration is equals to 1, so that is called normalization condition. So if we combine these two, that is orthogonal condition and ortho normalization condition, so we get a general condition which is defined here by equation number 3.53. So we have the condition integral of psi I psi j dv equals to 1 if I equals to j, and if psi I psi j dv equals to 0 if I is not equal to j. This is misprint in this book also. It must be psi asterisk here. किसी एक का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, अदरवाइज ये ऑर्थोगोनल कंडीशन या नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी. तो अगर यहाँ पर आई जे हुआ, i इक्वल्स टू j हुआ, देन ये हो जाएगा आपका psi 1 asterisk psi 1 dv equals to 1, that is normalization condition. If I is not equal to j, means psi I asterisk psi j dv equals to 0, so this is called the orthogonal condition. So these are called the orthonormal set. This is called the orthonormal set, and here I will replace this by delta function also here. So this is the generalized form. That is the condition of orthogonality is this, and this is the condition of normalization. तो दोनों को अगर हम मिला दें यहाँ पर, तो in general we can write down psi 1 asterisk psi j d tau is your volume element equals to delta ij. So this delta ij is called here the Kronecker delta function, and this is nothing, this is just either 1 or 0. So for same eigenstates, this is equals to 1, that is corresponds to the normalization condition, and corresponds to the orthogonal condition. The दोनों eigenstates different थे. In that case, this Kronecker delta function is equals to 0. So this is the general form of orthogonal and normalization condition. So this is called the orthonormal condition. Means both conditions are here, orthogonal condition and
normalization condition. So this is called the orthonormal set of functions. So two wave functions corresponds to different energy states. They are written in the terms of orthonormal set of function using the Kronecker delta function in this way. So this is one way by which we can check that whether the given wave functions, whether they are orthogonal wave function or they are normalized wave function. So just to apply these two conditions and you can check that. So these are also the properties of a wave function, that is the admissible properties of a wave function. Then this property is also very important, degeneracy. So degeneracy, basically, I have told you that there are two things. A wave function can have different energy state, or different wave functions can have same energy state. So there are two things. एक पार्टिकल का एक वेव फंक्शन है और उसकी डिस्टिंक्ट अगर एनर्जी स्टेट्स है, या अगर उसका बहुत सारी एनर्जी स्टेट है और उसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन ओनली सिंगल है, सो इन दोनों को हम डिफाइन करते हैं डीजेनरेसी की टर्म्स में. सो the degeneracy is basically if suppose you have more than one wave function psi1 psi2 psi3 और सभी वेव फंक्शन की जो एनर्जी है वो सेम है, सपोज E है. सो वेव फंक्शन psi1 for a wave function for a particle in particular energy state is suppose energy is E. The wave function for second particle is suppose psi2 and the energy is again E. Psi3 again energy is E. So these type of states are basically called the degenerate states. So degenerate state को अगर आप एक सिंपल सेंटेंस में याद रखें तो सीधा सा है large number of wave function and single energy. So if there is a same energy corresponds to different eigenstates, so these states are called the degenerate state. Where these states are found, if I say you example, so white dwarf star, you all know that white dwarf star is basically the end stage of the stellar evolution. So in the white dwarf star, all the material when star form due to the fusion, nuclear fusion, so from nuclear fusion, that is due to the reaction of hydrogen, the helium stable nuclei formed there by releasing the enormous amount of energy, and ultimately when your star cooled sufficiently, so its temperature becomes very small. So at low temperature what happens, all the electrons there, they goes into the Fermi degenerate state. So in the Fermi degenerate state, you know that that is the state which is where the particle they also obey the Pauli's exclusion principle. So Pauli's exclusion principle says that the two electron can have the same energy state but with opposite spin. तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, हुन्स लॉ पढ़ा होगा. तो उसमें ये है कि दो पार्टिकल की सेम एनर्जी स्टेट हो सकती है इफ दे हैव अपोजिट स्पिन. So one spin is up and one is down. So this is the same thing here, that we have two wave function. So suppose एक इलेक्ट्रॉन जिसकी अप स्पिन है उसके लिए वेव फंक्शन psi I है, psi j है यहाँ. दूसरा जो पार्टिकल जिसकी स्पिन डाउन है, सो उसके लिए वेव फंक्शन psi k है और दोनों की एनर्जी सेम है. So here the particles they are also satisfying the Pauli's exclusion principle. So these type of states are basically called the degenerate states, and which are obtained in the case of white dwarf star or neutron star. So there the particles like electrons, they are completely in the Fermi degenerate state. Okay, and this white dwarf star is completely supported by the degeneracy pressure, not the gravitational pressure. In ordinary star, when from molecular ground the star is formed, so the reason for forming the star is gravitational force. Due to own gravitation the star is formed.
बट वो बहुत ही हॉट स्टेट में होता है स्टार, और जब वो बिलियंस ईयर के बाद जब उसकी डेड स्टेज में आता है, व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, so it becomes completely cooled, temperature becomes very low, और जैसे टेम्परेचर लो हो जाता है तो वहां पर क्वांटम इफेक्ट्स आ जाते हैं. So temperature becomes low such that T is very less than the Fermi temperature. So when temperature of the system is less than the Fermi temperature, so the quantum correction comes there, and that's why in that case this quantum mechanics of degenerate state is important. ओके, तो डीजेनरेसी का मीनिंग बेसिकली ये है कि टू वेव फंक्शंस आर मोर देन टू वेव फंक्शंस इफ दे हैव सेम एनर्जी, सो दैट इज कॉल्ड द डीजेनरेट eigenstates. In other words, if suppose there are different energy states or different energies corresponds to a single eigenstate. So if suppose there is a one wave function corresponds to a particular energy state, suppose I, and there are more than one energies, so psi is single, psi1 or psi I, and energies are different, E1, E2, E3. So this is called the non-degenerate state. Okay, so just opposite of this degeneracy, there is a non-degeneracy. तो यही बेसिक डिफरेंस है इसमें. लार्ज नंबर ऑफ वेव फंक्शन सिंगल एनर्जी आर कॉल्ड द डिजेनरेट स्टेट और degeneracy, and single wave function large number of energy, that is called the non-degenerate state. Okay, so in such situation, when the wave functions or your system is suppose degenerate system, so it doesn't it is not necessary that the wave functions are orthogonal. Remember this is the special case. If suppose you have two different wave functions, और अगर आपका दोनों की एनर्जी करस्पॉन्डिंग एनर्जी सेम है, तो ये जरूरी नहीं हो कि वो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन हो. यानी कि इक्वेशन नंबर जो हमारी 3.51 है, वो जरूरी नहीं कि इस डीजेनरेट स्टेट में वहां पर सेटिस्फाई हो. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, so this is about the basics of the wave function and बाउंड्री कंडीशन एट लार्ज डिस्टेंस. अभी मैंने आपको बताया कि दिस क्वांटिटी बेसिकली गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी जैसे जैसे हम लार्जर डिस्टेंस पर जाते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, एंड ऑलमोस्ट एट r इक्वल्स टू इंफिनिटी द प्रोबेबिलिटी बिकम्स zero or it vanishes at infinity, so that is the wave function also here becomes zero. ठीक है, तो ये बेसिकली हम इसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन. एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशंस मींस द सॉल्यूशंस ऑफ a particular problem when r or distance is very large or infinite. So when we discuss the boundary value problems, especially for one dimensional potential step or for square well potential or for barrier, जहां पर हम बाउंड्रीज यूज करते हैं, वी हैव सपोज टू बाउंड्रीज, फर्स्ट रीजन सेकंड रीजन. फर्स्ट रीजन का पोटेंशियल कुछ जीरो है, सेकंड रीजन का कुछ और है. सो इन दोस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इट इज इंपॉर्टेंट टू पुट these conditions in order to solve the Schrodinger equation. Okay, so this is one of the boundary condition for the solutions of Schrodinger equation at large distance or for infinite r. Okay, so these are some basic things which are used when we deal with the Schrodinger equation and with the wave function. Then there is another quantity which you already know, पिछले semester में भी हमने पढ़ा था. It is called the probability and probability current density in 3 dimension. Okay, so what is the significance of this probability? अभी हमने यहाँ पे देखा था probability हमारी quantity mod psi square, but if we the probability of finding a particle in some bounded region अगर हम कैलकुलेट करें किसी स्पेस में, तो प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है वो अगर किसी बाउंडेड रीजन में हम कैलकुलेट करें, सो दिस प्रोबेबिलिटी बेसिकली डिक्रीजेस एज टाइम गोज. ओके, कहने का मतलब हुआ कि जैसे अगर हम किसी पार्टिकल की किसी बाउंडेड रीजन में कैलकुलेट करें,
तो प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वो जैसे जैसे टाइम elapsed होता जाता है वैसे वैसे उसकी प्रोबेबिलिटी जो है डिक्रीज होती है इन दैट बाउंडेड रीजन। इसका मतलब ये हुआ कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल आउटसाइड इन दिस रीजन मस्ट इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। तो कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास जैसे एक वेव पैकेट है, उस वेव पैकेट में अगर आप पार्टिकल को की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो वो प्रोबेबिलिटी जैसे जैसे टाइम इलेप्स्ड होता जाएगा तो वो प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वहां पर डिक्रीज होती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आउटसाइड द वेव पैकेट द प्रोबेबिलिटी मस्ट इंक्रीज। Ideally or finally we will prove that probability is independent of time, but if suppose we don't know this conclusion, तो हमारा पहले ये just हम एक imagine करते हैं कि when we calculate the probability inside the wave packet, so with respect to time suppose probability आपकी decrease होती जा रही है, तो उसी time in order to have the probability conserved outside the wave packet the probability must increase by the same amount। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि the probability must remain conserved। How we correlate with the this probability with the classical quantity like current density? So we know that in ordinary hydrodynamics or in electromagnetic theory, we have the famous equation that is called the continuity equation, or it is called the mass conservation equation। So here rho is called the, if suppose you are talking about hydrodynamics, तो rho को हम बोलते हैं यहाँ पर density। अगर आप fluid की बात कर रहे हैं तो rho is the fluid density and J is here the, it is the current density। Okay, so fluid is suppose conducting, so it will be the current density। या अगर J equals to n EV रखें हम, ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल है तो E आ जाएगा और न्यूट्रल मीडिया आपका तो n V हो जाएगा ओनली, तो V हो जाएगा आपका फ्लूइड वेलोसिटी। So this equation is also given in electromagnetic theory। तो रो वहां पर हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड जी हो जाएगा आपका करंट डेंसिटी। So this is very fundamental conservation law which we know। Now we will correlate our probability with this classical equation, and that will give us a new quantity that is called the probability current density। So how to get this? So it is a very simple to derive that probability current density expression। We already know the probability is given by suppose PR dr is the probability of finding a particle at position r। So that is mathematically given by integral of psi asterisk psi d tau। Okay, now what you do, you differentiate this equation with respect to time। So if you differentiate this equation with respect to time, so we get the left hand side term as dp by dt, राइट हैंड साइड टर्म में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट सेकंड लगा करके। तो यहाँ पर सपोज ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो जस्ट ये कि हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ली और इसको डिफरेंशिएट किया। देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to replace this d psi asterisk by dt and this d psi by dt using the Schrodinger टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, जो हमने पहली क्लास में इसके पहले देखी थी, जिसमें कि आपकी Schrodinger टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हम देखे थे I h कट दो psi o dot t equals to minus h कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर psi प्लस v psi। तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू रखेंगे। So I am using that time dependent Schrodinger equation। So this is our time dependent Schrodinger equation। Now take the complex conjugate of this Schrodinger equation। So the complex conjugate will change the sign here, that is plus का minus हो जाएगा I h कट dou psi asterisk over dou t। Here psi का हो जाएगा psi asterisk because our wave function is complex one। तो इसका आप complex conjugate लेंगे तो यहाँ asterisk आ जाएगा। Similarly यहाँ asterisk आ जाएगा और because there is no any I term here, तो symbol जो है आपका minus minus रहेगा, plus plus रहेगा। Now see here we need psi into d psi asterisk by dt। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आपकी ये इक्वेशन है इसमें psi से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, और ये लेने के लिए इक्वेशन जो ऊपर वाली है हमारी, इसमें हमें psi asterisk से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
So we are multiplying equation 3.63a by psi asterisk and equation 3.63b by psi and then subtracting. तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपकी एग्जैक्टली ये क्वांटिटी आ जाएगी राइट हैंड साइड में जो यहाँ पर है. So let us do this. So when we multiply by psi here psi and here psi asterisk, so when we multiply by this psi in this equation, so हमें ये टर्म मिली माइनस आई एच कट psi दो psi asterisk और दो t, और सब्ट्रैक्ट किया विथ आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय psi asterisk, तो ये टर्म मिली हमें यहाँ पे माइनस आई एच कट psi asterisk दो psi और दो t. सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये हो जाएगा v psi psi asterisk और यहाँ पर हो जाएगा v psi psi asterisk. So both are same, whether psi psi asterisk या psi asterisk psi, दोनों मॉड psi स्क्वायर है. और सब्ट्रैक्ट किया तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और बचेगी ये दोनों टर्म सिर्फ यहाँ पे. तो विथ psi h कट स्क्वायर माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m psi डेल्टा स्क्वायर psi asterisk और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा. इसको रीअरेंज कर लिया हमने, आई एच कट माइनस आई एच कट को कॉमन ले लिया और इधर से इससे डिवाइड कर दिया. सो वी आर गेटिंग हियर साई दो साई एस्ट्रिक्स ओवर दो टी प्लस साई एस्ट्रिक्स दो साई ओवर दो टी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड की टर्म इधर लिया तो ये बच गया यहाँ पे. ठीक. नाउ दिस इक्वेशन इन राइट हैंड साइड, दिस टर्म इट कैन बी सिंपली रिटन एज दिस वन. तो यहाँ पर हमने इसको लिखा और ये जो टर्म है यहाँ पर dp by dt, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया वहां पर हमने इस इक्वेशन में यहाँ. सो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिली एंड दिस कैन बी आल्सो रिटन बाय दिस वन. ओके, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम वी हैव अप्लाइड हियर अ ग्रीन थ्योरम. सो ग्रीन्स थ्योरम में ग्रीन थ्योरम की हेल्प से हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं. ग्रीन थ्योरम का डेरिवेशन बहुत बड़ा है, आप कभी उसका सॉल्यूशन बता देंगे. सो फ्रॉम दिस टर्म वी गेट दिस वन एंड हियर वी हैव आल्सो रिप्लेस्ड द वॉल्यूम इंटीग्रल बाय सरफेस इंटीग्रल यूजिंग द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. मैं आपको एक और तरीका सिंपल बताता हूँ. अगर आप ग्रीन थ्योरम यूज नहीं करना चाहते तो यहाँ पे इस टर्म को बेसिकली हम क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ दिस टर्म. और जब आप डाइवर्जेंस ऑफ दिस टर्म करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे यानी फर्स्ट सेकंड लगा करके आप करिएगा, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ओनली ये बचेगा दिस वन. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक हियर you can write down this equation simply as volume integral of divergence of this term. Okay, and divergence of this term will give you this finally. And then volume integral I have converted into surface integral using the Gauss divergence theorem. तो Gauss divergence theorem में जब यूज करूंगा तो जो divergence of this quantity था वो कन्वर्ट हो गया यहाँ पे surface integral में. So this is the solution, dp by dt equals to minus h cut by 2im and surface integral of this quantity. Okay, or if I suppose here define this quantity is j, which quantity, this one. Now again अभी यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको आएगा. अभी यहाँ पर बेसिकली हमें डाइवर्जेंस ऑफ j लिखा है, तो इसको आप चाहें तो अभी सरफेस इंटीग्रल में मत बदलिए, इसको एज इट इज रखिए यहाँ पे एंड राइट डाउन डाइवर्जेंस ऑफ दिस टर्म. एक इंटरमीडिएट स्टेप यहाँ पर नहीं है. सो डाइवर्जेंस ऑफ दिस टर्म जब रहेगा और इस पूरी होल क्वांटिटी को आप मानेंगे यहाँ पर j, तो j हो गया आपका h और इधर आ गया प्लस हो गया, तो j इक्वल्स टू h कट अपॉन 2im दिस. ओके, so j is called here the probability current density. When we compare these equation, so this is now our equation dp by dt plus divergence of j equals to 0. इसको आपकी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है हाइड्रोडायनेमिक्स में उससे कंपेयर करिए. तो यहाँ पर j था आपका करंट डेंसिटी, ठीक है, या फ्लूइड डेंसिटी. रो था आपका रो था फ्लूइड डेंसिटी, j था करंट डेंसिटी. सिमिलरली यहाँ पर P हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड J हो गया आपका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी.
Rho is here volume charge density or fluid density. Here P is probability density. J is here simple current density. Here J is probability current density. Okay. So this is our new quantity which is called the probability current density. And you can calculate this J for the given wave function. अगर आप कोई वेव फंक्शन एक दे रखा हो किसी पार्टिकल का, तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, और उसको सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं. तो फाइनली वी विल गेट dp by dt इक्वल्स टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ j, एंड इसको अगेन हमने यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल में लिखा. एंड अगेन इफ यू यूज हियर द definition, the condition, boundary condition, that when x is very large, that is x tends to infinity, so this surface integration vanishes there, that is this goes to 0, and we finally get dp by dt equals to 0. So p becomes constant here, that is probability becomes constant here. So this is the about the probability current density. Yes, Shresh Kant Mishra. सर जो इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास dp by dt is equal to minus h cut upon 2im इंटीग्रल ओवर वो जो क्वांटिटी है, उसका सर कन्वर्जन यहाँ जब अपन नीचे किए तो वो सिर्फ बाहर ग्रेडियंट आ गया और इंटीग्रल हट गया. वो सर समझ नहीं आ रहा है, मतलब वो ट्रांजिशन उस इक्वेशन का. यस सर, यस सर. मैंने पिछली बार इसको डिराइव करवाया था ना तुम लोगों को. प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी. देखो देखो देखो, एक काम करना, क्या करना, ये जो मेरा कर्सर दिख रहा है स्लाइड, यस सर, क्या करना, यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रल मत लगाना अभी. यस सर. वॉल्यूम इंटीग्रल रहेगा एंड टेक हियर डाइवर्जेंस. ओके, यस सर. नेबुला वेक्टर डॉट, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा. देखो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज साई स्ट्रिप्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड तो क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर साई, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज डेल्टा साई, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो ये हो गया डेल्टा साई स्ट्रिप्स. तो एक ये टर्म मिली. अब डाइवर्जेंस ऑफ दिस, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो ये टर्म मिली, माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो सेम टर्म विद प्लस माइनस साइन मिलेगी ना. तो यस सर. तो वो कैंसिल हो गई और बचा सिर्फ यही आपका ओनली. तो ये बेसिकली आपका बचा यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ दिस क्वांटिटी, और इसको मैं होल क्वांटिटी को इधर लाया यहाँ पर, तो ये हो गया यहाँ पे प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे, वेयर जे इज दिस. तो ये यहाँ पे एक मिसप्रिंट है ये, क्योंकि ये मैंने जिस बुक से लिया उसमें भी मिसप्रिंटिंग है. तो ये सरफेस इंटीग्रल बेसिकली अभी नहीं आएगा यहाँ पर. ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है, कुछ नहीं. बाद में फिर आप इसको वॉल्यूम इंटीग्रल करके और आप इसको सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दीजिए. तो पिछली बार का भी सॉल्यूशन है उससे भी देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है ना. ओके सर. तो आज का जो कंटेंट है मैं आपको ये भी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, या मैं इसको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप उस पे जाकर भी देख सकते हैं ना. सिंपली यूट्यूब चैनल में मेरा आरपी प्रजापति डालना, तो वहां सब मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप बाद में भी इनको देख सकते हैं. क्लियर. यस सर. और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वीडियो ऑन करे और डिस्कस कर सकता है. Otherwise, this meeting is going to end. We have 1 minute only. सर बोलिए. ऑडियो फ्लक्चुएट होता है सर, ऊपर नीचे, कई बार बहुत स्लो आता है, सुनाई नहीं दे.